अगर आप में से कुछ लोग इंडिया मार्ट इंटरनिमेश के इन्वेस्टर हैं, then I can guess what you are going through because stock has crashed around 30% in just a short span of 5 days. जनवरी से हम इस स्टॉक को गिरता हुआ देख रहे हैं. So आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि it used to be a superstar stock. I mean, it's like the only listed B2B marketplace in Indian market और वो ऐसा बुरा क्यों परफॉर्म कर रहा है. So you might be going through many self doubts. साधन पे हम करते हैं रिटेल इन्वेस्टर के डाउट को सिंप्लीफाई, जैसा कि हमने बहुत पहले एप्पल के लिए किया था कि एप्पल जब लो प्राइस पे अवेलेबल था तो इस चैनल पे साधन पे हमने एक वीडियो रिलीज किया था और उसके बाद एप्पल के स्टॉक प्राइसेस को आप देख सकते हैं दैट इट हैज मूव्ड अराउंड 50% फ्रॉम दैट लो बॉटम. सो क्या इंडिया मार्ट भी अगेन ऐसे ही एक बार्गेन प्राइस पे अवेलेबल है या something is serious wrong with this stock? There are many open questions. So hopefully after this video आपके जो doubts हैं on this it will decrease by some margin. मैं अमिताभ हाजिर हूँ अपनी एनालिसिस लेकर के. I'm going to select 4 reasons स्टॉक प्राइस इतने तेजी से क्यों गिर रहा है. So पहला रीजन जो है जो मैक्रो को लेकर के इस कंपनी की इन्वेस्टर प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे. इन्वेस्टर प्रोफाइल के चेंज होने से क्या चेंज हो जाता है इन दिस स्टॉक, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. थर्ड इज क्वार्टरली परफॉर्मेंस. अभी कंपनी की स्टॉक प्राइस गिरने में क्वार्टरली परफॉर्मेंस का भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल है. टेपिड सा क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिया इस कंपनी ने. सो इज इट अ रियल कंसर्न फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? विल टॉक अबाउट इट. विल हैव अ क्लोजर लुक एट द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी, नॉट जस्ट क्वार्टरली बट 3 years में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है और वेयर दिस कंपनी इज हेडिंग टू. बिकॉज सिर्फ क्वार्टर वाइज अगर आप एनालाइज करेंगे देन आई थिंक there are many factors are at play like seasonalities or external factors like COVID and Omicron and many things are there. So सिर्फ quarterly number के basis पे कोई कॉल नहीं लेना चाहिए. And fourth is the most important question. Is it really a growth stock or it is a growth stock in investment phase? And that is actually the reason why this stock has crashed so much. I think number 4 is one of the most important reason. Let's move on to macro factors at play. ये एक टेक कंपनी है और इंडिया में टेक कंपनी इज अ वेरी स्मॉल सेट. तो बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यूएशंस है उसकी बेंचमार्किंग करने के लिए आपको यूएस टेक स्टॉक्स को देखना पड़ता है. एंड वन बेंचमार्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द पल्स ऑफ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स परफॉर्मेंस इज नैस्डैक 100 टेक्नोलॉजी सेक्टर ETF. पिछले वीक का परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज गॉन डाउन बाय -7%. मैक्रो हेडविंड्स आर देयर इन मार्केट, दैट्स व्हाई दिस स्टॉक इज गोइंग डाउन. इसका एक क्लोजेस्ट पीयर आई कैन से इज naukri.com बिकॉज अगेन वो भी सिमिलर बिजनेस मॉडल है. वहां पे भी दे इंक्यूबेट मेनी बिजनेसेस और साथ ही ये इसका टेक बेस्ड मार्केट प्लेस बिजनेस है. उनका भी परफॉर्मेंस देखे तो लास्ट 5 डेज में -14% का रिडक्शन हुआ है उस स्टॉक के भी प्राइसेस में. सो ये दोनों एक पीयर फैक्टर एज वेल एज लार्जर एनवायरमेंटल फैक्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रीजन. बट आई थिंक आपके सारे डाउट इससे क्लियर नहीं होंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू रीजन नंबर 2 एंड दैट इज क्वाइट डीपर रीजन. इस कंपनी की शेयर होल्डिंग चार्ट आप देखें तो इसमें से 50% प्रमोटर के पास है और 25% यानी 1/4 के करीब FII के पास है. FII की क्वार्टरली होल्डिंग्स हम देखें तो क्वार्टर वाइज क्वार्टर इनकी FII की होल्डिंग बढ़ती रही है एक्सेप्ट लास्ट क्वार्टर में. दिसंबर क्वार्टर में इट हैज फॉलन बाय 1.4% फ्रॉम 27.91% इन सितंबर क्वार्टर टू दिसंबर क्वार्टर में 26.5%. साथ ही नंबर ऑफ FII इन्वेस्टर इन द स्टॉक हैज डिक्रीज फ्रॉम 280 to 250. यानी कि this is no more an FII favorite stock. This is pretty evident. अगर InfoEdge में भी देखेंगे तो वहां पे भी FII holding is quite high. So जहां पे भी high FII holding हो रही है वहां पे macro factors are bigger factors. तो अभी आपको पता होगा 1 महीने पहले US Fed ने कहा था कि inflation is a real challenge. अभी इन्होंने इसे multi year problem कहा है. आजकल का स्टेटमेंट है उनका, inflation is like a multi year problem. So they have to tackle this and that's why they have to increase rates. तो जैसे ही FII इन्वेस्टर को होम कंट्री में यानी US में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं then फ्लाइट बैक ऑफ मनी होती है, कैपिटल रिटर्न होता है, कैपिटल वापस आता है. FII इन्वेस्टर आर नॉट स्टिकी बेस्ड, they keep moving from one country to another and another to return to home. So FII होल्डिंग अगर हाई है तो आपको उस कंपनी में अच्छा रिटर्न भी मिलेगा. बट जैसे ही FIIs के यहाँ होम स्टेट में कुछ होता है US में, यूरोप में, तो विड्रॉल भी उतना ही फास्ट होता है. दैट्स व्हाई दिस सडन विड्रॉल फ्रॉम these stocks like InfoEdge and Indiamart is a reason why this stock has fallen so much. But the reason lies in quarterly performance and I'll show you the quarterly numbers.
तो क्वार्टरली नंबर्स को डिस्कस करने से पहले हम एनुअल नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। FY19 में 507 करोड़ की टॉप लाइन थी और FY21 में 670 करोड़। ग्रोथ इज देयर बट नॉट दैट हाई। लेट्स लुक एट EBITDA परफॉर्मेंस। सो FY19 में 70 करोड़ के EBITDA से ये बढ़ करके अभी 326 करोड़ की ऑपरेटिंग मार्जिन बना रही है। ह्यूज जंप। FY19 में 3% की EBITDA मार्जिन थी जो FY20 में 26% हुई और अभी 49%। सो ह्यूज जंप इन EBITDA वी आर सीइंग हियर। प्रॉफिट जो है FY19 में 20 करोड़ था, अभी 280 करोड़ हो गया है। सो 14x जंप इन प्रॉफिट नंबर्स। क्वार्टर वाइज सेल्स इनका अगर YOY कंपेयर करें तो 174 करोड़ से बढ़ के 188 करोड़ हुआ, जो कि नॉट अ ह्यूज जंप। QOQ भी ये जंप बहुत ही मिनिमल है। वहीं क्वार्टर वाइज EBITDA मार्जिन भी एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है एंड दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न। फ्रॉम 50% से घट करके ये 45% हुआ इन लास्ट क्वार्टर एंड दिस क्वार्टर इट हैज रिड्यूस्ड टू 42%। बहुत ही टेपिड क्वार्टर रहा इंडिया मार्ट के लिए। मेन डिसअपॉइंटमेंट हुई वो EBITDA मार्जिन में हुई। EBITDA मार्जिन रिड्यूस टू 42%, 10% रिडक्शन YOY बेसिस पे। सो EBITDA मार्जिन कम होने का बेसिक रीजन इज एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय बेनिफिट एंड आउटसोर्स सेल्स कॉस्ट जो है वो 36% थी एक साल पहले, अभी वो 43%। नंबर वन रीजन इज दैट द सैलरी गॉट री रेटेड, बिकॉज हमें पता है कि IT सेक्टर्स में री रेटिंग हुई है, सैलरी हाइक हुई है और दे आर हायरिंग फॉर ग्रोथ बिकॉज इंडिया मार्ट इज पॉइज्ड फॉर ग्रोथ। कुछ एम्प्लॉय को रिप्लेस करने के लिए भी दे हैव टू गो फॉर रिप्लेसमेंट हायरिंग। दीज कॉस्ट आर क्वाइट रियल बिकॉज सैलरी एक बार बढ़ जाती है तो फिर घटती नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू नॉर्मल ऑफ कॉस्ट और दैट्स व्हाई द मैनेजमेंट ने कंजर्वेटिवली गाइड किया है कि 38% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज सस्टेनेबल फॉर मीडियम टर्म। क्या ये कंपनी ग्रो कर सकती है आगे? नाउ लेट्स लुक एट लीडिंग इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, डेफर्ड रेवेन्यू। इट इज बेसिकली एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर और जो सब्सक्रिप्शन फी, लाइसेंस फी कलेक्ट करते हैं अपफ्रंट में, वो सबको ऐड करके डेफर्ड रेवेन्यू बनता है। तो डेफर्ड रेवेन्यू इंडिकेट करता है कि आगे कितना रेवेन्यू आने वाला है। सो अगर ईयरली ट्रेंड देखें तो 23% कैगर से ग्रो कर रहा है, विच इज क्वाइट हेल्दी। क्वार्टरली numbers is also 25% CAGR. So there is no challenge in terms of revenue for this company. दूसरा लीडिंग इंडिकेटर इज द कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। वो नंबर भी 18% कैगर से ग्रो कर रहा है पिछले 6 साल से और पिछले 5 क्वार्टर में भी ये 24% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। So basis this we can say that Indiamart is going to have a decent top line in coming quarters. So the biggest change in this company's business model is that this doesn't look like a growth company. ये कंपनी ग्रोइंग फेज में थी अभी तक। 2-2.5 साल से हम वी आर लिविंग इन अ पैंडेमिक और मल्टीपल वर्जन्स हुए हैं। उसके कारण क्या हुआ कि इस कंपनी कुड नॉट ग्रो लाइक अ ग्रोइंग कंपनी, बट इस टाइम को यूटिलाइज करके कंपनी हैज put some effort in towards investment side, and let's talk about what they are doing in investment. And actually यही reason है जिसके कारण investor they are not comfortable कि ये लोग ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, because अगर आप investment करते हैं तो उस केस में market risk बढ़ जाता है, because this is not what you control. This is something where you are dependent on other companies, other acquired entity to deliver so that you can deliver well. IndiaMart is basically a SaaS business because ये subscription model पे काम करता है और एक SaaS business को grow करने के लिए most important thing is to retain their customer, और इस customer को retain करने के लिए there is a ratio जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में जिसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिटेल में बात की थी। there is a ratio called net revenue retention. Net revenue retention basically आपका monthly run rate, revenue rate plus upgrades done by customers minus downgrades minus churn divided by monthly run rate. This is the most important formula to understand the health of SaaS business. So upgrades को बेहतर करने के लिए there is a way and that is called upscaling or cross selling. अगर एक नया कस्टमर आपके पास हुक हो जाता है तो उससे रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए you have to cross sell multiple products. So you have to explore into different domains. How a good SaaS business differentiate itself from a normal SaaS business? They incubate new businesses through selection of micro domains, basis the deep understanding of customer needs. That developing the capability to build new lines of business is very critical for long-term growth of a SaaS business. IndiaMart को अगर grow करना है for a long period of time and if it wants to get its value, proper value, then they have to incubate new businesses. That's what McKinsey is saying. That's what
net retention revenue वाला formula is telling us. So अगर आप deeper level पे समझेंगे, then you would understand the importance of acquisitions. So let's look at their acquisition strategy. दो allegations company पे लग रहे हैं जो investors के मन में चल रहा है कि whether they overpaid and whether it is a wrong acquisition altogether. The company I'm talking about is Busy Infotech Private Limited. Busy is basically an accounting software जिसको इन्होंने खरीदा है by paying up to 500 crores. They are going for a full 100% acquisition. Unlike पहले इन्होंने अभी तक जो इन्वेस्टमेंट किए थे, largely it is minority और strategic in nature. 26%, 20% kind of acquisition इन्होंने किए हुए हैं already different businesses में, which are complementary in nature, and their focus is exactly the same what McKinsey suggested, that micro domains develop करना है basis द कस्टमर नीड्स. तो इनका कस्टमर जो है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इनका कस्टमर है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. अगर एमएसएमई को अगर आप सर्विस करना चाहते हैं तो उनकी सारी प्रॉब्लम को आपको कैटर करने के लिए आपके पास एक बुके ऑफ प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है. एंड दैट इज देयर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी सो फार, कि दे आर एक्वायरिंग कंपनीज विच आर helping them in logistics, in bookkeeping, and in other ancillary activities like legal transactions को sort out करने के लिए एक Legistify में भी इन्होंने invest किया है. So the market opportunity for accounting market in India is quite big. एक estimate ले तो the total addressable market is roughly 5,000 crores. और currently इस market में 3 players हैं. Organized players में one is Tally, which is roughly 70-80% market share. 10% market share फिर Busy के पास है, and Tally has 2 million customers. Busy has around 2 lakh paying subscribers. So around 1/10 of the size of the market leader. But experience-wise, वो 30-year-old, this is 20-year-old. So they have deep domain expertise, but they are more than a accounting software. They are also a kind of enterprise resource and planning software also. जैसे कि SAP होती है. So they are basically a bridge between Tally and SAP for SME clients, because SME cannot afford an SAP, or Tally is affordable, but Tally doesn't offer those kind of support system which Busy is offering right now. So large market opportunity is obvious reason. Second is established brand है, जिससे इस business में काफी stickiness है. Acquisition के साथ एक question ये उठ रहा है कि since they already hold 26% in a company called Simply Vyapar Private Limited. Simply Vyapar is also a accounting software provider, but the difference between these two companies is one, that their target market size for Simply Vyapar is do it yourself kind of clients, यानी कि किसी बहुत ही छोटे business, यानी micro and small enterprises are their customer. एंड वहीं इस कंपनी के लिए इट इज मोर ऑफ अ B2B, इसमें जहां पे कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज साइज की कंपनीज इसके प्रोडक्ट के टारगेट कस्टमर्स हैं. माय रीडिंग ऑफ मैनेजमेंट सेज दैट they acquired Busy full hog 100% into Busy because they had hold this company, this Simply Vyapar, for some time, for a year or so. So they understood the business, they understood the opportunity, and that's why they could go full hog and acquire 100% of a company, of established brand. So हालांकि nature of business is similar, but this is the late stage grown company. वहीं Simply Vyapar is growing company, तो वहां पे growth rates are very high. अगर Simply Vyapar की बात करें तो Simply Vyapar जो है वो उन्होंने 26% stake लिया था by paying 30 crores. इस कंपनी की जो सीरीज डी राउंड हुई है उसमें इस कंपनी की वैल्यूएशन 833 करोड़ हो गई है. पहले ये 26% के लिए 32 करोड़ दिया, यानी कि रफली 130 करोड़ का वैल्यूएशन था. अभी ये 6 टाइम्स हो गई है फ्रॉम इट्स वैल्यू इन लास्ट 1-2 years. So 6 times kind of valuations growth हुआ है, and that's why they have invested 1% additionally, and for that they have invested 30 crore more. They are seeing the growth in Simply Vyapar, which is an app basically, and which is again with accounting software. So they understood this market, and now they are investing going full hog. So I think it's a very legitimate way to expand. Problem with Busy was that Busy has limited capital. So Busy के पास ज्यादा capital नहीं था. I spoken to some of the people who use Busy as part of my scuttlebutt. तो उन्होंने मुझे बताया कि सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है, बहुत ही easy to use है, but they are not able to sell to other people because they are not spending much. अगर आप market acquire करने में खर्च नहीं करेंगे, then obviously you will not be able to scale up, and their inability to scale up this business
was an opportunity for a large network player like IndiaMart. I see a clear synergy here. The promoter wanted to exit because they were unable to grow, and IndiaMart wanted a product जो कि वो क्रॉस सेल कर पाए to its existing customer. So एक clear cut synergy मुझे दिख रही है. So if they have gone full hog and 100% acquisition, जो existing investor हैं they are very वो थोड़े से डर गए हैं कि ये कंपनी क्या कर रही है. हमने तो इन्वेस्ट किया था एक marketplace पे. Now they are becoming like an incubator. If you understand the business in depth of any SaaS business, then you would appreciate that incubating new businesses is equally important. Margins इस कंपनी के केस में 50% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तक गया, बट वापस कंपनी ने गाइड किया है कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट इतने बढ़ गए हैं, सो एम्प्लॉय कॉस्ट के बढ़ने के कारण मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड वुड रिमेन रेंज बाउंड एट 38%. तो मार्जिन गाइडेंस जो है रिड्यूस कर हो गई है और ग्रोथ की क्लियर गाइडेंस नहीं आ रही है, बिकॉज मोस्ट impacted sector from all this turmoil due to Omicron and COVID is MSME. So MSME इनका target market है and there's a huge opportunity for MSME to grow, but because of external factors, growth is lacking. So the company is focusing on investment. So I think that is very practical and that is the right way to approach things. And that's why I am holding this stock since last 3 years and it is a 4-bagger for me. But still I'm not selling it because I see the opportunity in MSME space and they are the best person to capitalize on it. And they are adding muscles by acquiring companies like Busy. और उन्होंने अपनी acquisition strategy को और explain किया था इस con call में. And they said that every quarter they would acquire one small minority stake and every year they would target to have a Busy like acquisition. Or they have huge cash at their hand, like 2300 crore का cash at their books है, तो उसे भी वो यूटिलाइज कर पाएंगे. सो आपके पास कैश है, कैपिटल है, नेटवर्क है. नाउ यू नीड गुड एडिशनल प्रोडक्ट्स जिसको कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेच पाए. सो बाकी ऑपरेटिंग मेट्रिक्स पे IndiaMart इज डूइंग जस्ट फाइन. इट इज गोइंग ऑन अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी. So I think investors should not panic because somebody has changed their opinions. FII has changed their opinion because they had acquired minority stake in Simply Vyapar. Now they have gone majority stake, 100% stake in Busy. So यहाँ पे जो एक शिफ्ट हुआ है कंपनी के आउटलुक में, कंपनी के माइंडसेट में, वो शायद कुछ इन्वेस्टर क्लास को पसंद नहीं आ रहा है. दैट्स व्हाई this sudden turmoil has happened with the stock price. I can go wrong, but at least I try to understand things in depth. Because बिना डेप्थ में गए अगर आप अल्फा क्रिएट करना चाहते हैं, then I think you are fooling yourself. अगर आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनना है प्रॉपर, जो कि बेंचमार्क्स को बीट कर सके ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, then you should know the business. साथ ही थोड़ा बहुत मार्केट को भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है. So that's all I have to say about IndiaMart. अगर आपको और कोई क्वेश्चन है then you can ask me. I'll just try to help you in comment section. So please do comment how you like the video and hope to see you in the next video. Thank you.